so people can take the benefit from this good topic. Actually, is quite interesting one, which I'm quite keen to learn myself. So yeah, I'll let you, take the lead and carry on. Sure. Let me just also share my screen. Right. Let me see if my screen was visible. Yeah, it is. Thanks. Okay. Okay, so I put the session is in Urdu, so I'm starting Urdu then. Yeah, use Second. the dynamics language converter. Is absolutely all right. Okay, I think we are good. All right. First of all, thank you for all of our sponsors, for making it happen and supporting us. And ERP implementation do's and don'ts for the technical team. Um, so I'm really interested to talk about this topic because I know that most of the technical teams in most of the companies are working from offshore. They are based in India, Pakistan, and other countries. Um, and we have been working with them for I mean, I've been working with them for about 15 years in various capacities in various companies. And I always try to make sure that they are part of the team, right? They're not just some outsiders where we are just giving them, uh, you know, documents unko diye ja rahe hain, and then we are just expecting it. You will just do the work and then give it to us. So, um, so I was thinking about it. I could not come up with a very good title. That's why I said do's and don'ts. But later on, as I continued to think about this topic, I thought, it's better we talk about what the implementation is, what the ERP implementation is. Um, तो my goal today is कि हम थोड़ा सा देखें इसको from overall ERP perspective, right? And since my background is always in Dynamics AX, and finance and operation later on, therefore I'll be talking more about ERP. However, this session can be applied to any implementation. I don't think the process is very different in other areas. And lately, as we are seeing, most of the customers are going with both CE and FNO, um, and even Power Platform. So uh, I work I work with the teams in the teams where you know all different practices are working together, and then processes is still the same. तो आइडिया ये है कि थोड़ा सा ERP इम्प्लीमेंटेशन में बात करेंगे क्योंकि मैं जब काम कर रहा होता हूँ टेक्निकल टीम के साथ तो आई रियलाइज के उनको इतना ज़्यादा ERP इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेसेस का नहीं पता होता और वो ज़्यादातर एग्नोस्टिक होते हैं और वो एग्नोस्टिक रहना भी चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद you know that's not their thing to know about, right? This is something which is happening onshore in other countries, wherever you are in US, Canada, UK, Europe, Australia. So their thought process is not the same as ours is. And it's also some of the blame is on us because we don't take time to kind of let them know the reasons about several things. So ERP implementation, उसकी methodology पे बात करूंगा. Uh, I try to be generic because every company has its own methodology. Um, but for the most part, I think my understanding is that these days things are pretty much same in every company, but there are different flavors, different variations there. और फिर उसके अंदर टेक्निकल टीम का जो रोल है जो होना चाहिए उस पे थोड़ी सी मैं अपना ओपिनियन दूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ डूज एंड डोंट्स पे बात करूं. Uh, this is my introduction. I'm a director of development. I'm looking after retail and consumer products industry here at Hitachi Solutions. My role is mostly, working with different other practices and teams to ensure that our customers are happy, our implementations are going on as smoothly as possible, and
I also do implementation. I mean, it means like I also work as technical architect on at least one implementation on the side, so that I can, get involved when I'm not just away from the technology. Um, Working with Dynamics AX and D365 for about 16, 17 years now. And recently I found great interest in process improvements and making sure that um, the processes that we put together, they are scalable and that they actually make our implementations are scalable. We can kind of reuse the implementation methodology and the teams and the processes in other implementations as well, and kind of learn from one and move to another. So that's also one thing that I find really, really interesting, and I get involved in these in those situations where I have to contribute or I have some opportunity to learn. अच्छा, ERP जाहिर है अगर आप लोग सुन रहे हैं, जनरली सबको पता है ERP क्या होती है, राइट? Enterprise Resource Planning, and it's uh, I remember when I started learning about it like 16, 17 years ago at Music. At that time, we had no idea what ERP is. Even we didn't even know कि AX जो है ना वो एक ERP होती है. और आहिस्ता आहिस्ता हमें पे बहुत सारे मॉड्यूल्स उसके समझ में आना शुरू हुए और काफ़ी चीज़ें भी बाद में. Um, in a nutshell, ERP is a central platform जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम बिजनेस फंक्शंस आके कन्वर्ज करते हैं. They provide data, they provide results at the end. Plus, ERP also provides some additional functions to run those business functions, those business units smoothly. So, होता ये है कि every company, regardless of which industry they are in, they try to find an ERP solution that fits their needs. There are many popular ERPs in the market, as you know. Uh, so वो सबके साथ सबको यानी एनालाइज करते हैं. इट्स अ होल ERP सिलेक्शन प्रोसेस. और वो ये देखते हैं कि काइंड ऑफ गैप एनालिसिस एट द वेरी टॉप लेवल कि भाई हमारी नीड्स जो है ना, हमारे जो बिजनेस फंक्शंस हैं, उनके साथ कौन कौन से ERP ज़्यादा मैच कर रहे हैं. तो उस प्रोसेस के एंड में उनको एक ERP मिल जाती है कि अच्छा ठीक है, हम डायनामिक्स लगा लेते हैं या हम ऑरेकल लगा लेते हैं या हम और भी बहुत सारे हैं. अगर उनकी बहुत बड़ी नीड नहीं होती तो विद इन माइक्रोसॉफ्ट दे कैन इवन गो विद निवेशन और बिजनेस सेंट्रल. So that's one process, right? But in a nutshell, to me, ERP is basically a platform, right, where different business functions can work, and at the end, you can get a consolidated reporting at the end through that platform. Now, what happens is that in almost all cases, uh, there are always gaps, regardless. Uh, कोई सा भी ERP वो चूज करें, जब उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, when going to the details, we then we figure out अच्छा ये gaps हैं, वो gaps हैं. Then we always, I think it's not new for everyone, but we always ended up customizing it, right? We always ended up adding new features to it, or uh, which is I think most important these days in Dynamics world, Dynamics 365 world, that we always ended up integrating with other solutions, not so much customizations. So वहाँ पे that is the thing where it takes most of the time during the ERP implementation. Uh, we always start a project with this one-line statement that, as less customization as possible, to out-of-the-box implementation and whatnot. But we all know that when we go into this implementation phases, we figure out, okay, uh, these are the gaps. We work with the customer. We try to prioritize those. We estimate the work and then we deliver it. We customize it and then we deliver it. So generally speaking, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होती है ना किसी भी ERP के साथ, it's very general that it's right out of the box. क्योंकि उनको बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि कस्टमर्स जो है ना वो किसी और ERP से डायनामिक्स की तरफ आ रहे होते हैं, राइट? जैसे मैं डायनामिक्स में इन्वॉल्व होता, आई नो दैट.
कि जब हमारे पास प्रोजेक्ट आता है तो the decision had already been made कि we will go with Dynamics. बहुत सी दफ़ा अपग्रेड्स हो रही होती हैं Dynamics से X2012 से D365 में। तो बहुत से कस्टमर्स को ऑलरेडी पता होता है कि यार ईआरपी क्या होता है, राइट? वो कोई ना कोई ईआरपी यूज कर रहे होते हैं, उनको का वो या तो वो ईआरपी अपनी एंड ऑफ लाइफ पे पहुंच गया होता है, या बहुत पुराना हो चुका होता है, या उनकी बिजनेस फंक्शंस, उनकी बिजनेस नीड्स पूरी नहीं हो रही होती हैं। तो एट द एंड दे डिसाइड कि यार चलो कोई नया ईआरपी ढूंढते हैं। उनके पास अगर यू नो पैसे हैं, और इफ दे कैन अफोर्ड टू डू दैट, दे जस्ट गो एंड स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट। अच्छा, अब उसमें एक्सपेक्टेशन हमेशा यही होती है कि भाई हम चूंकि एक आउट ऑफ द बॉक्स, सॉरी, एक मार्केट की अ, से एक एप्लीकेशन ले रहे हैं, तो वी विल बी एबल टू यूज इट आउट ऑफ द बॉक्स। वी विल हैव टू कॉन्फ़िगर इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, और इट विल बी डन। Yes, behind the scene, behind their minds, they have that thing in their mind कि यार थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन तो होगा, राइट? तो वहां पे उनको वो जब वो उस एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं ना, तो जब कस्टमाइजेशन आती है ना, तो वी विल हैव टू काइंड ऑफ प्रूव आवरसेल्व्स कि अच्छा ठीक है, वी विल मेक इट हैपन। ठीक है, उनकी जो टाइमलाइंस होती है ना इनिशियली जो हम दे रहे होते हैं, ज़्यादातर सेल्स वाले लोग दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर कस्टमाइजेशंस बहुत कम हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ना, जो उन्होंने खुद ही अपने मुंह से बताई होती हैं, लेकिन उनको भी अपनी पूरी तरह से बिजनेस नीड्स उस वक्त नहीं पता होती। फिर दूसरी चीज़ होती है इंटीग्रेशन। उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि शायद इंटीग्रेशन, दिस सोल्यूशन इज हाईली हाईली इंटीग्रेटेबल, मीन्स कि सिर्फ एपीआईज बनी हुई हैं और हमें बस उनको कॉल करना है और सारा काम खुद हो जाएगा। सही है, और कोई एज सच कोई एक्स्ट्रा डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक एक्सपेक्टेशन उनकी होती है। और ऑफ कोर्स उनकी, चूंकि वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है कस्टमर, हो सकता है वो हेल्थ केयर का हो सकता है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, रिटेल, और उन्होंने जब वो ईआरपी चूज़ किया होता है तो बहुत एक प्रोसेस से गुजर के सारी चीज़ों को देख के उन्होंने ईआरपी को चूज़ किया होता है। तो in their mind, since they have chosen that product which is really good, really um, popular, or proven in a particular industry, that's why it's we'll just go right off the bat. We'll just deploy it, we'll configure it, and we'll be able to use it, which is not wrong, right? But it's not also true. Okay, so I provided a little bit of background of ERP, uh, and what the customer's expectations are, just to you know lay some foundation about my main topic, which is implementation and do's and don'ts during the implementation. Now, this is the second topic that I want to touch on, and I think it's really important. Okay, um, to me, every team member should know what the process is, right? Some people argue that, well, not necessarily. I mean, we just plug in people for some particular phase and then we're just done with them and then just unplug them. No, in my mind and in my implementations, I try to keep my people all the way from initiate to deploy, uh, because there is a role to play, right? There is a need of every individual uh, for the success of that implementation. Okay, so इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी क्या होती है, क्या ज़रूरत है? जाहिर है हमें कोई ना कोई प्रोसेस तो चाहिए, वरना हम इतनी बड़ी टीम के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे, खासकर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इसके अंदर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में ना सिर्फ आपकी टीम, जो कंसल्टिंग टीम है, जो पार्टनर की टीम है, वो बड़ी होती है, बल्कि क्लाइंट साइड के पास भी बहुत सारे लोग होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे एंगेज हो रहे होते हैं आपके साथ। ठीक है, तो हमें एक प्रोटोकॉल चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। तो वहाँ पे मेथोडोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो हम हर पार्टनर की अपनी, जैसे मैंने कहा, होती है। तो वो जाके पहले ही कस्टमर को बता देते हैं कि भाई दिस इज द वे वी वुड वर्क, और अगर उसके अंदर कोई छोटे मोटे चेंजेस करने होते हैं तो दे वर्क आउट विद द कस्टमर। नाउ टू मी, as you can see all these things, Scrum, your own framework, to me it doesn't matter which framework are you using, which methodology you are using.
I think to me, the most important thing is that the team knows what the process is. If the team doesn't know, then I start seeing problems down the road. अच्छा अब क्या implementation methodology मैटर करती है? Yes, करती है. It's a great Dilbert graphic. uh, खासकर agile के बारे में. Agile programming or agile based software development has been around for quite a while, right? uh, but this is one of the most important thing I would like to mention about, or I should say, the confusion that people have in their mind, that you know it's like if we are agile, we don't have to write anything, we don't have to do any documentation. That's not true. I'm particularly focusing on agile methodology these days because I think most of the companies are doing iterative based development and implementations. So agile basically is top of it, ahead of it, where it's all started. So um, somewhere here and there, we sometimes notice that people have this thing in their mind, कि हमें तो documentation की जरूरत नहीं है. So this is, to me, as I said, it doesn't matter implementation methodology क्या है. आपकी आपकी कंपनी में agile scrum है, scrum fall है, waterfall है, और कोई nimble है, और कोई अपना कोई framework बना लिया है, right? Doesn't matter, right? You need to understand the process and you need to have the documentation to the level where it's easy to come, where it's required. I mean, it's not like that you keep writing documents, of course not, but to the point where you don't have to ask it again. You don't have to you know अपनी मेमोरी से ना सोचना पड़े कि क्या बात हुई थी. तो अब वो आपकी टीम फिर आपस में डिसाइड कर सकती है कि भाई कितनी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है. अच्छा, टेक्निकल टीम क्या होती है? टेक्निकल टीम और उनको उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? तो जैसे यहाँ पे कुछ रोल्स मैंने लिख दिए हैं जो मेरी नज़रों से गुजरते हैं ज़्यादातर, और हमारे यहाँ उनके मुख्तलिफ रोल्स एंड मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं रोल्स की, based on the need. Software engineer, we don't use a lot in the implementation, but we use mostly like technical consultant, technical architect, lead developer, data migration, DevOps. I mean, these roles are always there on the project. Now, regardless, what I find common in all of these people, in all of these roles, that they they are they are in the back seats. They are actually sitting behind and waiting that people will come and tell them what needs to be done, which probably true to some extent, but not always. And the other thing is that they, you know, uh, don't ask questions unless it's like unless they are writing a code and then they hit a blocker and then they get, oh wow, it's not working, so let's just ask this. So not true for everyone. Again, I just put a disclaimer here. Not everyone like that. But this is somehow, and this is regardless. This is not like I'm not saying this is the way offshore के लोग ऐसा करते. No. Even onshore अगर मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, the technical team is always coming late in the picture for some weird reason. Um, and somehow the project leadership is also not saying it, but they're thinking in their mind कि यार ये तो अभी हम जब FDD बन जाएगा तो आ जाएंगे, देख लेंगे, एस्टिमेट दे देंगे और ये काम करवा लेंगे. तो इस चीज को थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी मैं रोशनी डालूंगा, और आई थिंक डूज एंड डोंट्स मेरे ज्यादातर इसी पॉइंट पे होंगे कि वो क्या चीजें हैं जो टेक्निकल टीम को, जितने भी हमने रोल्स देखे हैं अभी तक, उनको देखनी चाहिए, उनको अपने मद्देनजर रखनी चाहिए बिफोर दे get involved in any project. अच्छा, अब I'm moving towards like my the main flow of the presentation today, like implementation phases, and the way I broke it up is, you know, each phase we'll talk about what that phase is, and then we'll talk about do's and don'ts. सबसे पहला phase,
इनिशिएट, आप उसको आप कुछ भी नाम दे दें आप, I'm just calling it initiate means के when the project starts, the team gets together, find the right people, and then we do some kickoff meetings and make sure everybody understands the process. Um, Next, we go to the analysis phase. Analysis, again, there are several names to that. But basically, what we try to do is in that phase is we had some time box time, like maybe 6 weeks, 8 weeks, depending on the size of the project. And we go and try to, we do some workshops to gather customer requirements. उसमें हम कस्टमर को थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बता रहे होते हैं. ज़्यादा वैसे तो डेमोज में बताया जा चुका होता है उनको ड्यूरिंग द सेल्स साइकिल, लेकिन उसमें थोड़ा और डीप में जा रहे होते हैं ईच फंक्शन वाइज. यानी अगर फाइनेंस का मॉड्यूल इम्प्लीमेंट होगा, AP AR GL, तो और डिटेल्स में जा रहे होते हैं. अगर सप्लाई चेन होगा उसमें, अगर आप जैसे इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग तो बात कर रहे होते हैं कि भाई प्रोडक्शन ऑर्डर्स क्या होते हैं. प्रोडक्शन ऑर्डर्स जब प्रोडक्शन में जाते हैं तो उसके बाद के क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो सारी चीज़ उनको ज़रा डिटेल में दिखा रहे होते हैं. और फिर उनसे भी उनकी रिक्वायरमेंट इस तरह से ले रहे होते हैं कि वो लोग भी कुछ आपको वर्कशॉप्स दे रहे होते हैं, आपको अपने बारे में बता रहे होते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ. सो दिस इज़ अ वेरी इंटेंसिव प्रोसेस टू मी, बिकॉज इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉम राइट आफ्टर द इनिशिएट. एंड और इसका इस फेज के एंड में हमें जो है ना प्रोजेक्ट स्कोप समझ में आने वाला होता है, कंप्लीट स्कोप, कि भाई टोटल हमें क्या डिलीवर करना है. आइडिया होता है बट यू नो देयर इज ऑलवेज 20% प्लस माइनस. अच्छा, इम्प्लीमेंट, दैट्स द मेन फेज. ये जनरली इटरेटिव होता है आजकल. यानी इटरेटिव मीन्स के इसके अंदर स्क्रम के हम लोग प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे होते हैं. जैसे स्प्रिंटिंग हो रही होती है, 2 वीक्स 3 वीक्स का स्प्रिंट होता है. uh, और कुछ स्क्रम सेरेमोनीज उसके अंदर हो रही होती हैं, जैसे डेली स्टैंड अप्स और retrospective at the end of the sprint planning and refinement, backlog refinement, all that. But finally, once we have that build ready, like whether it's customized, whether it's configured, regardless, whatever integrations are done at the end, एक validation phase आता है. और validation phase में हम of course testing कर रहे होते हैं. और सिर्फ टेस्टिंग नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में. और फाइनली हम लोग इसको डिप्लॉय कर देते हैं सिस्टम को. और डिप्लॉय की कुछ अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ अलग एक चेकलिस्ट हम बना लेते हैं. और उसको फिर मेक श्योर करते हैं कि तमाम टीम ऑन बोर्ड है, तमाम टीम अवेलेबल है. और उसमें कोई अगर you know कोई ब्लॉकर ऐसा नहीं है तो we'll, we'll, we'll go live. I mean, it's um, we can delay the go live. There's always go live is always delayed, but when it's finalized, then we go live. And it's regardless whether it's a bumpy ride or it's a smooth ride. um, so we'll उसकी फिर अलग details है. और after the deployment, after the go live, कस्टमर अपना सिस्टम, नया सिस्टम स्टार्ट कर देता है यूज़ करना. और ऑफ कोर्स जब वो यूज़ करना शुरू करते हैं तो कुछ बग्स आ सकते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन के इश्यूज आ सकते हैं, रिपोर्टिंग के इश्यूज आ सकते हैं. बहुत सी रिपोर्ट्स पहली दफ़ा रन हो रही होती हैं, खासकर क्वार्टरली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स जो कि डिप्लॉय होने के कुछ अरसे बाद रन होती हैं. तो वो सारी हेल्प, और इसके अलावा सिस्टम अपडेट्स. तो ये एक ऑपरेट का फेज होता है, उसमें भी हम लोग एंगेज रहते हैं कस्टमर के साथ, डिपेंडिंग ऑन अगेन द कॉन्ट्रैक्ट एंड द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट. Okay, I have only like probably 15, 16 minutes, so I would try to go and basically skip the stuff where it's not so important. So we talked about initiate. Uh, Initiate का जो प्रोसेस होता है जनरली टेक्स 2 to 3 weeks, जिसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि टीम को मोबिलाइज करके कस्टमर के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट कर दी जाती है, कुछ किक ऑफ मीटिंग्स की जाती हैं, रोल्स एक दूसरे को बताए जाते हैं. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हमारे यहाँ टेक्निकल साइड से अगर हम देखें तो टेक्निकल आर्किटेक्ट और टेक्निकल लीड जो होता है ना, अगर कोई है उसमें, तो वो इस फेज में इन्वॉल्व होता है, पूरी टीम इन्वॉल्व नहीं होती, विच इज़ ओके.
because at this time, we're just setting up some stuff. um, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेक्निकल टीम के लिए, जैसे टेक्निकल आर्किटेक्ट के लिए, वो ये कि वो SOW कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुई हैं उनको रिव्यू करे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फीडबैक दे। इट्स नॉट लाइक यार इट्स नॉट देयर, टू मी इट्स नॉट, I mean, to us, everything is accessible. Like in Hitachi, where I work, I can go in and I can find SOW and I can review. So if you have the same liberty, go in and figure it out and know, try to read what the scope, what the sales, अब एक sales to delivery hand off भी होता है कि sales वाले delivery को hand off करते हैं, तो उसमें technical architect, solution architect बैठते हैं। तो क्रॉस क्वेश्चन करें, पूछें, चीज़ों को समझें, और मेक श्योर कि आपको पता हो कि आप कस्टमर के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और अगर उसके अंदर कोई एडिशनल चेंजेस आती हैं तो यू कैन स्पीक अप एट द राइट टाइम, एंड इफ इट्स गोना इम्पैक्ट टाइमलाइन देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लेट देम नो कि अगर हम एडिशनल चेंजेस करेंगे तो क्या टाइमलाइन पे इम्पैक्ट आएगा। डोंट assume, ask questions. This is the theme which is quite recurring in my presentation today. Okay? Don't assume, ask questions. It's at the end, it's your responsibility to make sure that things are delivered. um, Analysis phase, it's the main, it's a big phase, not too big, but to me it's a very very important phase, क्योंकि इसमें स्कोप समझ आ रहा होता है, इसमें बहुत सारी गैप एनालिसिस हो रही होती है। जनरली इसमें टेक्निकल लीड और डेटा माइग्रेशन लीड भी इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ डेवलपर्स भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन the nature of the work that we're planning to do. But generally the outcome of this phase is, अच्छा, आउटकम कुछ ना कुछ होना चाहिए, सही है, सबके लिए। ऐसा नहीं है कि बस गए और सुनकर आ गए, राइट? तो टेक्निकल टीम के लिए जो आउटकम होते हैं हमारे यहाँ, वो जनरली एक हाई लेवल सॉल्यूशन डिज़ाइन, टेक्निकल डिज़ाइन हो सकता है, एक इंटीग्रेशन डिज़ाइन हो सकता है, स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं कि भाई कितने इन्वायरमेंट्स चाहिए होंगे जब हम बिल्ड में जाएंगे या इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे, सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी के क्या, क्योंकि हर कंपनी डिफरेंट होती है, राइट? हम पास कंपनीज में सिक्योरिटी कंप्लायंस या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है, लेकिन बाद में होती हैं, तो उस हिसाब से एक स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि अच्छा भाई, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि वीएम्स, जस्ट गिविंग अप एन एग्जांपल, कि भाई वीएम जो है ना वो रिमोटली कनेक्ट नहीं करनी RDP से, bastion सर्विस के थ्रू करनी है, तो यू नीड टू लिस्ट इट डाउन सो दैट whoever DevOps इंजीनियर, LCS का पर्सन, या आपका कोई टेक्निकल आर्किटेक्ट जो भी ये काम करेगा उसको पता हो कि हमें ये इस तरह से इन्वायरमेंट प्रोविजन करना है। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कि टेक्निकल टीम की भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो रहे होते हैं IT टीम के साथ, क्लाइंट के, और बेस्ड ऑन दैट वी विल बी प्रोड्यूसिंग सम डॉक्यूमेंट्स। This is just an example of a sample integration design that I created a few years ago. So this is the level of detail I personally go into, try to find with the customer, like, okay, you have this integration need, right? Oh, all right. Like, so I ask those questions कि भाई synchronous होगा, asynchronous होगा, उनको नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं, हम business से पूछेंगे, and then we make that decision. And we put them into a document and we then present it at the end of the analysis कि भाई, uh, दिस इज व्हाट वी गोना डू, यहाँ पे हम ओ डेटा यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे हम ये चीज़ यूज़ कर लेंगे, और इसको ऐसे 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 करके इस तरह से बनाएंगे, और इसकी बेस पे हम कुछ एस्टिमेशन भी अपनी बैकलॉग में कर सकते हैं। जो फाइनल आउटकम होता है ना एनालिसिस का, वो हमारे, मतलब ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, लेकिन एक चीज़ जो लाजमी होनी चाहिए वो एक बैकलॉग होनी चाहिए, एक एट द एंड ऑफ द एनालिसिस, कि what work needs to be done, not just customization, not just integrations, overall configuration, data migration, जो भी है, जो भी उस प्रोजेक्ट में होना है, वो एनालिसिस के फेज में आ जाना चाहिए, रिटन डाउन, और इतनी उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए कि हम उसको रफली एस्टिमेट कर सकें, ताकि जब हम स्प्रिंट्स में जाएं तो हमें पता हो कि हम कितना काम कर सकते हैं, और वो स्प्रिंट प्लानिंग में हमें हेल्प करे। अच्छा, नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सी दफ़ा टाइम कम होता है, या चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पाती as we plan, that's totally fine. But at least if you have the list of items,
with some definition on it, that's enough. Then you can have those refinement calls in your implementation phase to refine them and then put estimates on it. अच्छा, अब टेक्निकल टीम के लिए डूज एंड डोंट्स क्या है इसमें एनालिसिस फेज में? वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करें जितना हो सके। आमतौर पे खासकर अगर फंक्शनल लोग अगर कोई डेमो दे रहे हो या फिर वो कर रहे हो तो वो टेक्निकल लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते। इफ़ यू हैव द लेवरेज, इफ़ यू कैन जॉइन दोज कॉल्स, प्लीज जॉइन, टेक नोट्स, लुक एट द कस्टमर्स, सी के उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं, show your presence, ask questions, right? No, don't just go there just to sit there. Ask questions. That's how you also learn, right? uh, एनालिसिस में हमेशा कोई ना कोई एक डिलिवरेबल अपने ऊपर रखें, वरना अगर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो यू वॉन्ट लर्न एंड यू वॉन्ट शो योर वैल्यू विच यू आर एडिंग टू दैट कस्टमर ड्यूरिंग दैट फेज. Like customer is paying for you, so you should add some value. And that value at the end will help you during the implementation and the deployment phase, because you will know more about the project start of the implementation as opposed to if you had not joined those analysis phase calls and whatnot. Uh, कोशिश करें. Fahad, Fahad, Yeah. just a time check. Nine, I think now 8 minutes left Oh, for okay. you. Okay, thank Oh you. no, thank you, thank you very much. The time is going very fast. Sorry. uh, okay. Don't assume. Ask questions about the scope of everything. Don't underestimate. अगर requirements clear नहीं है, तो put some assumptions there and then try to estimate. ताकि uh, this way you can defend yourself. Right? Estimation is a big topic. It's a very complex topic. I know, but what I find good is that you can always put assumptions if you don't understand the requirements completely, so that people actually help you to define those requirements. Actually, implementation is the biggest phase. Of course, it takes 3 to 6 sprint cycles, maybe more, depending on the size of the project. Sometimes ERP implementations are like multi-year implementations. So, of course, here I'm just putting the numbers which are really uh, common as I see. Uh, implementation इटरेटिव्स होती हैं, जैसे जनरली आजकल इसके अंदर कस्टमाइजेशंस भी हो रही होती हैं, इंटीग्रेशन डेवलपमेंट भी हो रही होती है, इंटीग्रेशन डेवलपमेंट भी हो रही होती है, configuration, zero migration, so all streams are working together. So the technical team completely involved होती है, ये full time होती है ज़्यादातर टीम मेंबर्स. और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है टू मी इज के अगर आप ब्लॉक्ड है ना, तो आप अपनी डेली स्क्रम में या जो भी आपकी मीटिंग है उसमें बोलें ज़रूर, बताएं ज़रूर कि आई एम ब्लॉक्ड and who can unblock you, right? Most of the time, you know who can unblock you. So just say, right, so that you can move forward fast. Constantly refine your remaining hours, estimate the work to the extent possible, uh, create technical designs. I think I already talked about that in analysis, but in the implementation, I think when you go into the details of development, I would rather spend 5, 10 minutes, not minutes, few hours, couple of hours maybe, just to write high level design. And this is also important that I found recently कि कुछ जो local specific language होती है, try to use that. For example, uh, इंडिया पाकिस्तान में लाख का वर्ड यूज होता है, 1 लाख, तो यहाँ लोग नहीं समझते what is lakh, right? तो try to use what the units here is, date formats. If you're not sure about those, ask. Um, Again, don't assume, ask questions. Don't underestimate. अगर आपको नहीं पता तो सही टाइम बताएं, और इससे जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर्स और टेक्निकल लीड्स को काफ़ी हेल्प होती है आगे कम्युनिकेट करने में. Okay, the validation phase, that's we are done with the build development now. अगर मैं एक चीज़ बोलूँ वैलिडेट फेज का जो एक बुनियादी होता है वो ये कि एट द एंड ऑफ द दिस फेज वी वांट साइन ऑफ फ्रॉम ईच कस्टमर्स पार्टी, ईच कस्टमर एसएमई और जो भी उनके बिजनेस डिवीजन है उसके हेड से हमें साइन ऑफ लेना होता है. तो उसमें अब ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, एंड टू एंड टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रही होती है, ट्रेनिंग भी. बाज़ कंपनीज में ट्रेनिंग्स अलग होती हैं, हमारे यहाँ एक साथ हम करते हैं
उसके अंदर हमने कुछ टाइम्स बनाए हुए होते हैं कि इस टाइम पे ट्रेन करेंगे, इस टाइम पे टेस्टिंग करेंगे। और इट्स ऑल्सो वेरी इंटेंसिव प्रोसेस। एक फाइनल कट ओवर चेकलिस्ट भी हम वहाँ बना लेते हैं या बना रहे होते हैं, बल्कि वो पहले से ही बन रही होती है। उसका मकसद ये होता है कि जब हम गो लाइव की तरफ जाएं, वी नो व्हाट वी नीड टू डू। और एट द एंड ऑफ दिस वैलिडेशन फेज हमारे पास जो है वो नो गो नो गो डिसीजंस लिए जा रहा होता है जनरली, कि क्या हम रेडी हैं, क्या मजीद गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं, अ, क्या कुछ ऐसे ब्लॉकर्स हैं कि हम, कोई भी हो सकते हैं, कि हम गो लाइव नहीं कर सकते जो हमारी प्लान डेट थी। तो दीज आर द वैलिडेशन फेज के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, ये काम होते हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं। uh, इसके अंदर भी टेक्निकल टीम completely इन्वॉल्व होती है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, आई हैव सीन समवेयर around 4 to 8 weeks of validation phase. It may be more depending on, again, the size of the project and what you are planning to do in that phase. अच्छा, इसमें टर्न अराउंड जो है ना डेव टाइम का, डेवलपर का, टेक्निकल लोगों का बड़ा क्विक होता है। तो जब वैलिडेशन फेज करीब आता है तो ट्राई टू बी, एंड दिस इज ट्रू फॉर बोथ वैलिडेट एंड द डिप्लॉय फेज, कि इफ यू आर नॉट अवेलेबल फॉर एनी रीजन, जस्ट ट्राई टू प्लान अहेड, लेट योर पीएम नो कि भाई आप अवेलेबल नहीं होंगे। आमतौर पे डेली नाइटली बिल्ड्स जा रही होती हैं, डिप्लॉयमेंट्स हो रही होती हैं। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि you communicate your availability. डोंट रीफैक्टर कोड अननेसेसरली। अगर आप बग फिक्स कर रहे हैं तो सिर्फ बग फिक्स करें, कोई एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी वहाँ ना करें, बिकॉज most of the code is stable. You're only fixing which is really really required for the go live. So I haven't seen, I personally do code reviews, so I sometimes pick up those things. um, Assume that all other scenarios would not break. Yeah, don't assume that. Always test. So it's also your responsibility to test. And finally, deployment is the last thing. I think there's one more, by the way, but there's no do's and don'ts. Spinning up production environments, execution of cutover checklist. It's the most, I think, ऐसा time होता है कि जिसमें हम uh, we try to be available 24 hours. Of course, we can't. We are human, so we have like a couple of people, like just technical lead नहीं होता उसमें, और भी एक दो लोग होते हैं आपके साथ टेक्निकल साइड पे, जो कि आप लोग टाइम स्विच कर रहे होते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, उसकी डिटेल में जाना भी टाइम भी नहीं, और वो होगा भी नहीं इसमें। लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि अ, जो जो चीज़ें वैलिडेट फेज में थी वो यहाँ पे भी हैं, कि भाई आप ऑन टोज रहें, अवेलेबल रहें, communicate your availability, ask about the severity and priority, because this is like a big thing for that customer, right? uh, and if there are any issues, let the PM know. um, एक और चीज़ कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को वैसे तो एक्सेस नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आपके पास एक्सेस है, वैसे तो नहीं होता किसी भी टेक्निकल बंदे के पास, अनलेस टेक्निकल आर्किटेक्ट को अगर चाहिए फॉर एनी, तो don't log into that system unnecessarily. It's to me it is like very no go thing, like sometimes I've seen it. क्लाइंट्स, कुछ क्लाइंट्स बड़े वो होते हैं कि कोई बात नहीं, आते तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हो तो बहुत लिमिटेड एक्सेस हो। एनीवेज, अगर है तो लॉग इन ना करें जब तक कि कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ना आए। फाइनली, go live support. um, these are the things which we are doing in go live. After go live, we fixing bugs if there are any, communicate the release cycle, कि भाई हम वीकली रिलीज करेंगे या बाई वीकली रिलीज करेंगे। We actually work with the customer on that. If there is a very blocking issue, then we may do a nightly or on demand release. Version updates हो रही होती है तो उसको plan करना होता है। So these are all the things which mostly the technical team is doing, of course, along with the customer user team to validate that, or अगर कोई any new enhancements हैं. All right, so we went live. It's time to celebrate, reflect, and retrospect. So after every go live, if there is any retrospective going on at the whole project team level, please join that, provide your feedback, lessons learned. Uh, I think that would be very helpful for your career all afterwards as well. You know what you learn and what you can do better next time. I think that's all I have.
I'm able to finish that in time. Right? I don't know if you have time for any questions. Absolutely. Thank you, Fahad. Right on time. Very calculated. I'm sure this is what you have been doing in the delivery as well. so, so amazing stuff. So, just one question. I think a lot of people have heard about this sure step, which Microsoft used to follow. So, where we are standing with that while we are using Agile and all those sort of new fancy stuff. So, where we can still use Azure or where we need to stick with Agile, if you can just give 1 minute quick Yes. response. So Yeah. let me tell you, I have not used SureStep in my life. Uh, I know a little bit about that. I know it's more of a waterfallish thing. Uh, but I have never used that, so I can't tell. But one thing I can tell, there are some projects where waterfall may be better than agile. So as I said in the beginning, to me, methodology is not doesn't matter. If it if the team knows what the methodology is and they can follow it, that's the way to go. Now, I have seen some small projects where we work on sometimes, and waterfall works best. It's not full implementation. It's like very small implementation or like one module implementation. They already went live with something, and I've found that in those situations, the waterfall based process works best. So I cannot answer this question because I have no experience. I've been doing agile for about 10 years now, uh, and that's where I've done most of my implementations. Okay. Thank you. Good That's question, by the way. fine. Thank you. No problem. All right, guys, we are on time again. Please feel free to reach out to Fahad anytime should you have any further query. I'm sorry, it's just because of the time I was holding Andre for last, I think, 20-25 minutes. So thanks, Andre, for to bear with us. And Fahad, once again, on behalf of Pakistan User Group and all the community here, appreciate your time. It has been excellent session. I think if I have to count it in the all day, this is one of the best session. I have enjoyed it myself. So very knowledgeable, very useful for many people. And as we said, these sessions will be all recorded and will be shared on the YouTube. So a lot of people will be taking the benefit uh, from the knowledge.